So now for explanation, now we reach at question number 3. इस specific question का introduction सामने लिखा हुआ है, we have discussed that already. And then हमने इसका ओवरव्यू भी लिखा and that is in front of you. हमने पहले सीखा कैसे लिखना है इसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने ओवरव्यू में क्या लिखा, प्रीवियस लेक्चर गूगल पे अवेलेबल है. If you will write down that how to write the overview of the summary question, तो वो आपको आंसर मिल जाए. The thing is that we are going to now work on the explanation today to understand that एक effective explanation को कैसे लिखा जाता है. So हम अब अगर explanation लिखेंगे तो explanation के हम 2 पैराग्राफ्स बनाएंगे. पहले पैराग्राफ में यानी कि समरी का पैरा 3 एंड पैरा 4 होगा. एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ नंबर 1 यानी कि पैरा 3 ऑफ समरी में, पैरा 3 ऑफ समरी जो एक्सप्लेनेशन का पहला पैराग्राफ होगा, उसमें हम इन 2 वेरिएबल्स को ले लेंगे, बस एंड कार. एंड देन दूसरे वाले पैराग्राफ में हम ले लेंगे फुट एंड बाइक को. हम बात करेंगे द इतने परसेंट यूजर्स वर्कड ऑन द बस इन 1960 दैट स्लाइटली वेंट अप टू दिस वन इन 1980 followed by a considerable decline to this one in year 2000. एक सिंगल सेंटेंस बनेगा. अब यहां पे चूंकि 3 ही स्टेप्स हैं तो आप 2 सेंटेंसेस बना नहीं सकते. कार this much percent uses and then यहां से हम कहेंगे it was a speedy rise to this much percent in 1960 backed by another fine push to this one in year 2000. It was here in 1960, slight decline 1980 with a drastic dip in year 2000. मैंने कहा था जब बहुत बड़ा डिक्लाइन आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ड्रास्टिक. हम क्या यूज करेंगे, ड्रामेटिक. बहुत बड़ा इंक्रीज होगा तो स्पीडी स्टीडी. इससे दोनों ऑपोजिट होंगे. बहुत बड़ा अप, स्पीडी स्टीडी. बहुत बड़ा डिक्लाइन, ड्रास्टिक. बहुत बड़ा डिक्लाइन, ड्रामेटिक. क्लियर जी. आगे चलिए. फुट इतना, it was a drastic decline to this one in 1960 and then it was a reasonable drop another to this one in year 2000. So we will now work on the explanation in sentences. एक sentence लिखेंगे हर एक वेरिएबल पर, मगर हम कम इंक्रीज पर स्लाइट, a bit, ज्यादा इंक्रीज पर स्टीडी, ज्यादा इंक्रीज पर स्पीडी, कंसिडरेबल, ज्यादा डिक्रीज पर ड्रास्टिक और ड्रामेटिक के वर्ड्स को लिखते चले जाएं. और इस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को भी एनहांस करेंगे और हम अपने आंसर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे. शुरू करते हैं हम पैराग्राफ कहां से शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन का. पैराग्राफ नंबर 3 होगा एक्सप्लेनेशन का 1. कहां से शुरू करेंगे, टू इनिशिएट विद द बस एज अ सोर्स फॉर ऑफिस, कामा. अब अप्रोक्सीमेट फिगर है, देखें यहां पे, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है. अबाउट 18% workers selected this method in 1960, which slightly, हल्का सा, went up to 25% in 1980, followed by, और इसके बाद क्या हुआ, followed by a considerable drop to 15% in year 2000, full stop. हमने पहला वेरिएबल खत्म कर दिया. हेडिंग टूवर्ड्स, अगले वेरिएबल पे जा रहे हैं. हेडिंग टूवर्ड्स कार, कमा, जस्ट सिर्फ 5% वर्कर्स. अब वर्कर्स हमने पहले लिख दिया. 5% स्टाफ मेंबर्स adopted this mode for their
offices in 1960 which speedily climbed to nearly 23% in 1980, chased by another strong push to 35% in 2000। तो एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे अपने आंसर में, वो पहले बस, कार, बाइक और फुट को कंपेयर करेंगे 1960, फिर इन्हीं चारों को 1980, फिर 2000। याद रखिएगा, इतने अप एंड डाउन है। इफ यू बी टेकिंग वन वेरिएबल एंड उसको क्रॉस कंपैरिजन करेंगे उसका, तो डेफिनेट ग्रामेटिक एरर है। इसलिए कोशिश करें कि एक ब्लॉक को फिर दूसरे ब्लॉक को एक्सप्लेन करें, ताकि पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो, ब्लॉक आंसर हो, एंड ब्लॉक आंसर ऑलवेज फाइन फॉर देयर फॉर अ बेटर स्कोर। आगे चलिए जी, अब हमने हेडिंग टॉर्च लिख दिया, मूविंग ऑन। अब थर्ड पे आ रहे हैं, मूविंग ऑन फॉर बाइक्स, मूविंग ऑन फॉर बाइक, comma 25% office holders use this for their workplace in 1960, which went down a bit। हमने स्लाइड का वर्ड यूज कर लिया, अब हम यहाँ वर्ड यूज करें विथ डाउन अ बिट, इट वेंट डाउन अ बिट टू 20% in 1980, chased by, हमने पहले वर्ड चेज लिखा है, बैक बाय अ ड्रास्टिक, हमने पहले वर्ड ड्रास्टिक यूज नहीं किया, ड्रास्टिक डिप टू 5% in year 2000, full stop। Finally, comma आखिरी वाला है, finally comma what was the choice of a huge number of approximately 33% employees in 1960 which handsomely went down to an estimated figure of 16% in 1980, with 9% in year 2000, and full stop. So it is what all about the explanation. Again, you see how much words we have written, 2960. And if you see this paragraph explanation, paragraph number 1,
what we did in it, we have used word, how many words? We have used 73 words. अब क्योंकि variables सिर्फ दो थे और उनके अंदर सिर्फ movements तीन थी. So smaller, these are the sentences are smaller. So it is 72. Again, I'm writing 70. So now if you see the answer now, this becomes how much? 70 plus 75 plus 60 and plus introduction was of, I believe, 25, 29. So make it 30. And if the lesser are the variables, the lesser are the steps, the answer is at about 235 words, even then. So do not get worried about 150 mark. That will very easily go. Just concentrate upon the trends and do mention things with the good synonym, vocabulary words, and just control your nerves. Every answer will be within the control. So if there is any question, I would feel happy to answer the question.